पोइट्री में एक फर्क ये है कि कंसाइज स्पीच में बात करता है. दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोज. तो ये कहानी जब हमें सुनाया जाता है Hey, welcome to Course EdX. Today, this is lecture number 3. In lecture number 3, we are about to discuss the second category of Introduction to English as a subject. What is that? In the last lecture, we discussed about poetry as the first category of English as a subject. In today's lecture, we discuss about the second category. अभी second category कौन सी है? That is prose. सवाल ये पैदा होता है कि प्रोज क्या है. प्रोज के हवाले से जब हम बातें करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि जिस तरह हमने वजाहत किया था कि शायरी हमारी हकीकी जिंदगी का एक तस्वीर है अल्फाज में जिसमें ख्याल होता है और उसका तर्ज जो है उसमें मीटर है, राइम है, रिदम है. लेकिन अगर हम प्रोज की तरफ देखें तो प्रोज और पोइट्री में एक फर्क ये है कि पोइट्री के बारे में हमने ये कहा था कि एक्चुअली देयर शुड बी अ मीटर, देयर शुड बी राइम एंड रिदम. नाउ व्हाट इज इन प्रोज? प्रोज इज आल्सो द पिक्चर ऑफ आवर एक्चुअल लाइफ, मोर और लेस ट्रू, मोर और लेस इंस्पायरिंग. लेकिन इसमें यह है कि प्रोज में हमारे साथ सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा. इट मींस कि जो जुमला है इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. हमारे साथ वही सेंटेंस है और एक सेंटेंस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसके बाद चौथा. सेंटेंसेस को जब हम एक सेंटेंस को के साथ दूसरा सेंटेंस, फिर तीसरा सेंटेंस, फिर चौथा, इससे हम एक पैराग्राफ बनाते हैं. तो हमारे साथ प्रोज में हो गए पैराग्राफ्स और इन पैराग्राफ से फिर हमारे साथ मुख्तलिफ पैराग्राफ्स को इकट्ठा करके इनसे फिर लेसन बन जाता है. तो इस लेसन को जब हम स्टडी करेंगे तो ये लेसन जो है इसमें क्या होंगे? पैराग्राफ्स. पैराग्राफ्स में क्या होंगे? सेंटेंसेस. और सेंटेंसेस, हर एक सेंटेंस में हमारे साथ ये स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट. पोइट्री में ये है कि इसमें जो पोइट है, पोइट वो कंसाइज स्पीच में बात करता है. बहुत ऐसे स्पीच में जो एलोंगेटेड नहीं होता, जो मुख्तसर बात होती है लेकिन मुख्तसर बात में बहुत बामाना अल्फाज होते हैं. और जो प्रोज है एक्चुअली इसमें यह है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, लेकिन दिस स्पीच इज एलोंगेटेड. ये स्पीच जो है इसमें बातें जो है वो थोड़े ज्यादा, इट्स अ काइंड ऑफ स्पीच जो हम मुख्तसर के बजाय इसको एलोंगेट करते हैं, इसको ज्यादा बनाते हैं. अभी प्रोज का लफ्जी मानी है नफर और पोइट्री का माना है शायरी. अभी इस नफर से मुराद है तशरीह. ऐसे अल्फाज जिसको आप एक्सप्लेन करते जाओ, लेकिन it should not be that concise as poetry composition is. It is elongated speech. दूसरी बात ये है कि जब हम पोइट्री की बात करें, in poetry it is difficult for a common man to understand poetry. आम आदमी के लिए पोइट्री का समझना ये मुश्किल होता है, बल्कि प्रोज का समझना, he is able to understand prose. He is able to understand direct words. आपके सीधा साधे अल्फाज जो हम जब भी हम बातें करते हैं ये अल्फाज हमारी नसर है. लेकिन जब हम शायराना अल्फाज में बात करते हैं या शायरी का इस्तेमाल करते हैं, so that is difficult for a common man to understand. एक आम आदमी के लिए उसका समझना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इसलिए शायरी की जो स्पीच है वो कंसाइज है. It is such a speech which is not for common man. It is for some people who are literary people. So literary people जो है अदब से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं वो शायरी को समझते हैं. लेकिन at the same time prose जो है even literary and non-literary people can understand. Literary and non-literary वो लोग जो हमारे साथ अदब से ताल्लुक़ रखते हैं वो लिटरेरी
لوگ جو ہے وہ بھی اس کو سمجھتے ہیں اور وہ لوگ جو ادب سے بالکل ناشنا ہوتے ہیں پھر بھی وہ پروز کو سمجھتے ہیں۔ پوئٹری میں ہمارے ساتھ مختلف قسم کے کمپوزیشنز ہیں۔ ایک کمپوزیشن کی بات ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے ساتھ بیلڈ ہوتا ہے، اس میں ہمارے ساتھ مختلف نظم کے مختلف اقسام ہیں، وہ آڈ ہوتا ہے، ایلیجی ہوتا ہے ایٹسٹرا، سونٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر پروز میں ہم اس طرح بات کر سکتے ہیں کہ اس میں سٹوری ہوتی ہے، اس میں ایک ٹیل ہوتا ہے، اس میں ایک پیرابل ہوتا ہے، اس میں ایون ان چیزوں میں آپ کے ساتھ سوچ و فکر تخیل ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہے ایسے ہوتا ہے، لیٹر ہوتا ہے، اپلیکیشن ہوتی ہے، یہ تمام مختلف جز ہے ہمارے ساتھ پروز کے۔ تو جو امیجنیشن رکھتے ہیں یا جس میں خیال آ جاتا ہے اس کو ہم پھر کہتے ہیں لٹریری پروز۔ ایسا نثر جو ادبیات کے لحاظ سے اہم ہو اس کو ہم لٹریری پروز کہتے ہیں۔ اور ایسے جس میں ایسے ہے، لیٹر ہے، اپلیکیشن ہے، بایوگرافی ہے نا اور آٹو بایوگرافی ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں یا کسی بندے کو ہم کوئی رپورٹ بیچتے ہیں یا میمو بیچتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس طرح تخیل میں یا ادبیات کے لحاظ سے آپ نے نہیں سوچنا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو امیجنیشن ہے اس کو لٹریری پروز کا نام ہم نے دے دیا، اور یہ جو بات ہے اس کو ہم نے نان لٹریری پروز کا نام دے دیا۔ اب یہ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ فار ایگزامپل اگر ہم پروز کی بات کریں، سٹوری ہوتی ہے، ٹیل ہوتی ہے، پیرابل ہوتا ہے، فیبل ہوتا ہے، anecdotes ہوتے ہیں etc. There are a lot of types as we will discuss in this very book. Now آپ کو میں صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ Responsibilities of the youth. Responsibilities of the youth, it is actually a speech delivered by قائد اعظم محمد علی جناح۔ اب یہ ایک speech ہے، speech۔ اس میں ہم وہ تخیل والی باتیں نہیں کرتے بلکہ حقیقت پر مبنی باتیں کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح states us all the difficulties of the people of the time، لیکن وہ یہ بات نہیں کہتا کہ فار ایگزامپل قسمت کے حوالے سے یا ایسی باتیں جو شاعرانہ انداز میں ہو، نہیں۔ He is not concerned with that. His prose, his words, they contain subject plus verb plus object. It's not like that. There must be some kind of concise speech as in poetry. You must understand that this is the meaning of prose. ابھی prose میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ prose is actually the picture of our real life, our actual life in words, having the structure of subject plus verb plus object. And these words may be literary, these words may not be literary. Suppose مثال کے طور پر اگر ایک بندہ ہے وہ کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نشر کرنا چاہتا ہے جو مضمون کے لحاظ سے ہو، تو ضروری نہیں کہ اس کا جو سبجیکٹیو اپروچ ہے اس میں تخیل شامل ہو۔ ایک بندہ لیٹر لکھتا ہے، خط لکھتا ہے، اس میں تخیل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لہٰذا لیکن اگر ایک بندہ کہانی لکھتا ہے، اگر ایک بندہ ہمارے ساتھ ڈرامہ لکھتا ہے، کسی کیریکٹر کے الفاظ لکھتا ہے، تو اس میں اس کو چاہیے کہ وہ کسی بندے کو سوچنے پر مجبور کرے۔ This is actually called prose. دوسری بات جو کل ہم نے بات کہی تھی about the third part that we will study in this book، وہ ہے پلے کے حوالے سے۔ پلے پر مبنی ہمارے ساتھ جو باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے what is this word؟ پلے۔ پلے سے مراد یہ ہے کہ جب بھی ہم کتاب میں مختلف کیریکٹرز، there is character number 1، there is character number 2، there is character number 3۔ character 1 protagonist ہے، character 2 antagonist ہے، character number 3 flat character ہے۔ یہ مختلف کیریکٹرز ہیں۔ ان کیریکٹرز کا آپس میں ایک ڈائیلاگ بن جاتا ہے۔ ڈائیلاگ کے ذریعے سے جب ہم باتیں کرتے ہیں مختلف کرداروں کے منہ سے ان کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ الفاظ جب ہم ریڈ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ریڈ کرتے ہیں۔ when we read the words
spoken by the words of the characters included in a script, that is called play. जब हम उनको उन कैरेक्टर्स को हम लोगों से बनाते हैं, एक्टर्स आ जाते हैं, वो कैरेक्टर्स परफॉर्म करते हैं, फिर वो प्ले से ड्रामा बन जाता है. क्या बन जाता है? ड्रामा. So when it is performed on a stage, then it is called the drama. So stage is necessary for these characters to be performed, and then it is called drama. अभी एक टेक्निकल पॉइंट जो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि प्ले और प्रोज वो सेम चीज़ें हैं, इसमें इतना फर्क नहीं, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि प्रोज है और पोइट्री है और प्ले है. सिर्फ फर्क इतना है कि प्रोज में हमारे साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, और प्ले में भी हमारे साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है. लेकिन अगर एक लेसन है और उसमें हम एक स्टोरी बयान करते हैं, तो इससे मुराद ये है कि यहाँ पर एक पर्सन है, वो जानता है इस कैरेक्टर को भी, इसको भी, इसको भी, इसको. These are different characters. कैरेक्टर A, B, C, D. मुख्तलिफ किरदार है. ये बंदा यहाँ से इन तमाम किरदारों के बारे में हमें एक कहानी सुनाता है. हम कौन है? रीडर्स. तो ये कहानी जब हमें सुनाया जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के जरिए से, then it is called prose. लेकिन जब ये कैरेक्टर, ये जो है राइटर है, इसको हम ऑथर कहते हैं, प्रोज का लिखने वाले को हम ऑथर कहते हैं या हम इसको राइटर कहते हैं. सवाल ये पैदा होता है जब यही बंदा हमारे साथ रीडर्स को यही फॉर्मेट देता है कैरेक्टर्स का, लेकिन हर एक कैरेक्टर अपना डायलॉग बताता है with the help of his own dialogue. Now it means if it is character number A, A's dialogue is necessary, B's dialogue is necessary. Separately they present their dialogues. तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इस डायलॉग को हमने प्ले का नाम दे दिया. और अगर डायलॉग नहीं, स्टोरी का शक्ल है, इस प्लॉट को फिर हम इस तरह कर सकते हैं. This is called prose. दूसरी बात ये है कि जो प्रोज है, तो प्रोज प्ले को जब हम लिखते हैं, ये भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में लिखते हैं. इसको भी हमने नाम दिया प्रोज का. ये भी प्रोज है, लेकिन प्ले इज द पार्ट ऑफ प्रोज. आपको ये समझना चाहिए. दूसरी बात ये है कि ये डायलॉग जो है ये हम अमूमन डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, क्योंकि हर एक कैरेक्टर की अपने अल्फाज होते हैं, और ये जो हमारे साथ ये ऑथर है, इस मुसन्निफ के जरिए से ये जो इन कैरेक्टर्स के बारे में हमें बताता है, तो फिर इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इट इज रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच. सो ये हो गई हमारे साथ प्रोज, और इसके अलावा प्ले की मुकम्मल डिटेल ये हम पढ़ेंगे इस किताब में, और इस किताब में कुल है तकरीबन 22 लेसन्स, और हर एक लेसन को हम डिटेल में पढ़ेंगे. आई होप सो it will help you a lot. So inshallah in the next lecture we will start with unit number 1. Thank you all. Please follow and subscribe our channel.